Hi guys, so we have freshened up and now we are going to visit the temples. We have one pujari who will help us, assist us in terms of going to different temples. So let's see. And this is the hotel that we are staying in, Hotel Shiv Sagar. It is on the main road only. So they have this car parking also, which is very much important here because of the very congested area. So make sure when you're coming to Ujjain you have the car parking space available with the hotels. Otherwise it would be very difficult. And the good part is that you should travel by autos here in Ujjain. The hotelier said that there are like around 6,800 autos just itself in Ujjain who caters to this tourism, and I think it's very ideal to travel in a city by traveling in autos, by traveling in locals, then traveling in your own car. So let's see. We are just waiting for the pujari to come, and then we'll start from here. So guys, first we are heading towards the Mahakal Darshan, and we'll go inside the temple now. Shortcut in front of the hotel from where we are heading towards the temple. विश्व सौથી મોટું મંદિર બને છે સુपर कॉरिडोर. तो गाइस आप जो मेरे सामने देख रहे हो वो वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है उज्जैन में, नया कॉरिडोर वो उधर बन रहा है. अगर टाइम मिलता है तो हम उधर आपको ज़रूर लेके जाएंगे. तो અહીંયા 12,000 કરોડ રૂપિયા એમ જ લાગી ગયા છે. આ જે દુકાનો છે બધી જ તૂટી જશે, અને એવું પણ નથી કે આ તૂટી જશે, પણ આ લોકો માટે પણ એવી દુકાનો બનાવશે, પણ એક જેવી બનાવશે, એક જેવી, અને બીજી જગ્યા પર અને ગરમી ઠંડ વરસાદ तो गाइस महाराज बता रहे हैं कि जैसे कि काशी विश्वनाथ में पूरा कॉरिडोर बनाया गया है. अगर आप कभी काशी विश्वनाथ गए हो, पुराने काशी विश्वनाथ और आज की तारीख में जो काशी विश्वनाथ है, अगर आप वहाँ गए हो तो आपने देखा होगा कि पूरा कॉरिडोर नया बनाया गया है. उसी तरह से उज्जैन में भी नया कॉरिडोर पूरा बनाया जाएगा. और ये सब जितनी दुकानें हैं, ये सब दुकानें को हटा के उन्हें नई जगह दी जाएगी, नया स्पेस दिया जाएगा, सो डैट दे कैन कंटिन्यू विद देयर बिजनेस. જે મુગલોએ એને શાસન કર્યું હતું, અહીંયા જે મંદિર ધ્વસ્ત કર્યું હતું એનું અવશેષ જ્યારે અહીંયા ખોદ્યું હતું, આ બાજુ આટલું બાજુ જે ખોદ્યું હતું એમાં ત્રિશુલ, નરકંકાલ, જે જૂનો મહાકાલનું જે મંદિર હતું એની શિલાગ્રહ બધું જ મળ્યું હતું. એનું સમગ્ર જ્યાં એક મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે એમાં રાખ્યું છે. इन्हें पण जोवा तो मैं जई सकूं. तो गाइस यहाँ पे मुगलों के राज पे जब होता था तब
यहाँ पे पुराने मंदिर के जो भगवान के त्रिशूल और वो सब पाए गए हैं, वो सब यहाँ से निकाल के एक म्यूज़ियम में रखा गया है और वो पब्लिक व्यू के लिए ओपन होगा, हम देख सकते हैं। આ જ્યારે પ્રોજેક્ટ માટે જ્યારે ખોદવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે બધું મળ્યું અંદરથી ત્રિશૂલ નરકંકાલ જે મુગલ ટાઈમ્સનું હતું ને એવું વિચાર કે હજી જેટલું ખોદશે એટલું કદાચ નીચે નવું મળી મેસેજ આવ્યો કે 3 દિવસ માટે મંદિર બની છે, તો આજે આટલી ભીડ હતી તો આજનું ખુલી દીધું છે, આજનું પણ બંધ હતું કે આજે પણ બંધ છે। ચલો બહુ ફરવા લાયક છે। કાલ ભૈરવ છે, જેમ કે ક્ષેત્રપાલ છે, કાલ ભૈરવ મહાકાલના ક્ષેત્રપાલ છે, એમનું દર્શન કરવાનું। પછી શક્તિપીઠ છે, હરસિદ્ધિ અને ગઢકાલિકા બે શક્તિપીઠ ઉજ્જૈનમાં વિરાજમાન છે, 9 નારાયણ વિરાજમાન છે, 3 ગણેશ વિરાજમાન છે। અને મંગળનાથ બી કઈ છે ને મંગળનાથ મંદિર એ કૃષ્ણ ભગવાનની શિક્ષક થયું છે, સાંદીપની આશ્રમ। ત્યારે ભગવાને 14 વિદ્યા અને 64 કલા શીખી હતી, એ પણ મંદિર ઉજ્જૈનમાં છે, એ પણ ઉજ્જૈનમાં। सो गाइस हम वीआईपी टिकट लेके अंदर जाएंगे। सो मेरे पीछे जो है वो वीआईपी काउंटर आप देख रहे हो, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। एंड वीआईपी का प्राइस जो है वो है 250 रुपीज़ पर पर्सन एंड इट विल हैव अ लेसर क्यू कंपेयर टू द नॉर्मल पब्लिक क्यू दैट वी हैव। सो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, अगर आप अपने सीनियर सिटीजन को लेके आ रहे हो, एजेड पीपल को लेके आ रहे हो, तो इट्स प्रीफर्ड दैट यू टेक दिस 250 रुपीज़ टिकट विच विल बी ऑफ अ लेसर क्यू। बट अंदर जाके पता चलता है कि क्यू कितना बड़ा है कितना कम है, तो स्टे ट्यून। Guys, so this is the VIP ticket that you will get for 250 rupees, and what the Maharaj told me is that from every Tuesday to every Saturday 1 to 4 p.m. you can visit the temple inside and visit and take the blessings from nearby. If you want to put water and milk, pour water and milk on the shrine of Lord Shiva, then you can do it early in the morning from 6 a.m. to 8 a.m. So make sure that you are able to visit the temples on time. एंड अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दर्शन कराते हैं। So guys, this is the Rudra Kund which you can see here. And that's in front of me, guys. You can see the normal queue of people that are coming and going. સાઈ સવારી નીકળે છે ને પાલકી હા ગરમ લાગે છે। આ શું છે? આકલ મંદિર છે? આકલ મંદિર છે? આ છોટા મહાકાલ કહેવામાં આવે છે, અનાદિ કલ્પેશ્વર મહાદેવ। કલ્પેશ્વર મહાદેવ તો ખુલ્લું હોય તો કરી લઈએ ને દર્શન? આપણે પહેલી વારથી દર્શન કરી નાખીએ ને, એટલે પાછા આમ આવવાનું જ છે? અહીંયા જ આવવાનું છે। ઓકે। હજુ ઠંડુ ગરમ કમ લાગશે? લગ્યો હોય એવું। So guys, this is the new corridor that is getting built in Ujjain, and this is believed to accommodate a lot of people, and you know it will have the biggest corridor in ancient Asia. I think it's in world also. I have to cross check, so please pardon if I don't have the correct knowledge.
there are 51 gates in the Ujjain temple, and as per the queue management, you can enter into any gates and exit in from any gates. वो गई उसके साथ में। So guys, after the Mahakal Darshan, and thanks to the Pujari which helped us in terms of doing the VIP Darshan, we did the Darshan in a very less time, in a better way. We were able to stand there for 5-10 minutes and have the proper blessings. So now we are heading towards काल भैरव टेम्पल, और उसकी प्रख्यात ये है कि वहाँ पे दारू मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, और उसके अलावा 2-3 और छोटे छोटे मंदिर हैं जो हम ट्रैवल करेंगे। तो सागर, कवन, कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। रौनक, ये नास्तिक है। सॉरी मेरे को पता ना, आपको अगर याद हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रौनक इज एस्टिक, तो वो भगवान पे बिलीव नहीं करता है। तो बट ही डिल केम इन साइड, और वो अंदर जरूर आया था बट कुछ बोला नहीं, बस चला गया आगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तड़का लगा ना। एक सही काम ये हुआ कि अपने ने खा लिया, ऐसा ना तो मर जाता। हाँ, गर्मी में ना गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। पाए पैर को आराम मिलता है। ठंडा ठंडा लगा है। So guys, we are going to the next temple, which is Gadkalika temple. So let me go inside and देख ले हाल ले हटा। हाँ सही सर। एकदम सही बहुत ही नहीं करते। इसको सीधे रखो। guys, the best soda you can ever have, and there's a reason for that. You have to keep drinking, keep drinking, keep drinking.
You cannot stop that. That's the main reason. The best soda I have ever had. Cheers. For a bumpy ride. गाइस तो काल भैरव को दारू चढ़ाई जाती है, तो ये हमने दारू ली है। वो करता रहे। और यहाँ पे गाइस पूरी प्रॉपर शॉप है दारू के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। लोग तो पीते ही हैं, बट यहाँ पे भगवान को पीने के लिए भी पूरी दारू है। और ये देखिए सामने है मंदिर काल भैरव का, यहाँ पे दारू चढ़ाया जाता है। हम आपको अंदर लेके जाते हैं।